That's the toss ceremony. Mclaren have won the toss and they have opted to bowl first. Is the news coming right from the center of the ground against ARYAN Panther 77. So all the best for both the teams. Mclaren have won the toss and the captain Rajat has decided to bowl first. Test. So Mclaren Sports Club won the toss and the captain have decided to bowl first. The lineup goes as follows. Rajat said the captain Jitesh More, Alik Diwari, Sanket Moraskar, Suraj Tari, Vinod Wilson, Rohan Bogati, Prathamesh Kunkalkar, Naresh Gaonkar, Shivram Valvaikar, Smitesh Sawant and Naresh Parsikar. So that's a lineup for Mclaren Sports Club. And the lineup for ARYAN Panthers 77 goes as follows. Vishwajit Fatte Gaonkar, Avinash Gaus, Samarth Gaus, Pritesh Naik, Amir Kadekar, Sagar Vantamuri, Dattatre Narvekar, Pranal Sawant, Suresh Gaude, Rajan Damshekar, Nagraj Jamadar and Adarsh Naik. So that's a lineup for ARYAN Panthers 77. Both the teams are looking nicely balanced and it will be a good contest to see the very first match of the day. 7.
So a very good morning to everyone who just tuned in Goa in India, and what a wonderful match this is going to be. Mclaren Sports Club won the toss and they have opted to bowl first. As you can see, the team, the Purple Army, spreading on the ground. Wishing them all the best in this match, as well as for ARYAN Panthers 77 under the captainship of Vishwajit Fatte Gaonkar. With two outstanding players, Samarth Gauns, Avinash Gauns, and not to forget Pritesh Naik, the all-rounder performer, Amir Kadekar, good bowler, Sagar Vantamuri, youngster and another all-rounder performer, Dattatreya Narvekar, young talent, Pranal Sawant, Sarvesh Gaude, Rajan Damshekar, boom boom, Nagraj Chamadar and Adarsh Naik. That's the line of ARYAN Panthers 77. And I have time here to introduce two official umpires, Punya Palkar from Savai and Damodar Naik. To the right of the commentary box, to the left is Damodar Naik of Margaon. Two batters for ARYAN Panthers 77, Rajan Damshekar and Avinash Gauns, that is W, steps in as the opening pair for ARYAN Panthers 77, as they've been asked to bat first after winning the toss by Mclaren Sports Club. Rajat Seth, the captain, who will begin the proceedings of bowling right from the beginning, from the pavilion end. So once again, wishing both the teams all the very best on behalf of Veling cricketers. Royal T20 Championship 2022 on this beautiful Markai Village Panchayat ground. Are you ready? And soon it will be called as Let's Play. Very first ball, Rajan gets off the mark.
Very quick single from Rajan, and just the feel of the ball on the bat. Nicely done by Rajan. It's very important for the batters just to get the feel of the ball initially, as the beginning of the day. Mclaren, a good team to chase. It looks like that's the reason why the captain has opted to chase the total after winning the toss. Bowling first, Rajat Seth. Avinash counts, not taking his guard, marking his line. Oh, that will go for a boundary slide. Fumble there from Vinod Wilson, and the ball has raced away. And W gets off the mark with a boundary. In an uneven rise there, suddenly the ball just gone past the fielder, Vinod Wilson. A lovely shot gets hold of this one. It will go. It will be just pulled back. Yes, well done. Well done by the fielder. Almost maybe inches from the boundary rope. He has just pulled it back. And Avinash Gowans didn't quite get hold of this one in spite of that pull shot. But the timing was not appropriate. 2 runs. And these 2 runs will take the score up to 7 runs. Single from Rajan, boundary, and then a couple of runs from Avinash Gowans. He's on 6 runs. Well bowled. Just trying to make a comeback. Good delivery from the captain. He's got a huge responsibility of team Mclaren Sports Club. Rajat Seth. Lovely timing this time, but straight away to Vinod Wilson. No fumbling this time. Good fielding. Excellent piece of work. Made sure the ball didn't go past him as it did in the very previous effort from Vinod Wilson. Another single adding up to the total to take the score tally to 8 runs, as once again the boom Rajan Tamshekar gains the striking position. A bit of a change there in the fielding. The mid wicket has been adjusted by the captain. Watchfully played. That dot ball will sum up the over. Completion of 1 over, score is 8 runs.
for no loss. To begin the second over, it's Ernakulam Express. Vinod Wilson from the far end will be bowling to Avinash Gowns. Look at once again the team, the players of Goa Police are face off. Vinod Wilson versus Avinash Gowns. A lot of changes in the fielding from Vinod Wilson. As you can see once again, a wall of fielders in the covers, gully point covers, mid off and deep sweeper cover, deep third man. There's a deep short third man as well. Rising delivery, well bowled, a good start from Vinod Wilson. Sanket Moraskar is trying to just boost the morale of the players as he is making some noise there on the ground, which is very important to keep them alert and keep them motivated. The ball is up and could be the first breakthrough. Taken, completely mistimed the shot and a little bit of a change of pace from Vinod Wilson. Avinash Gowns wanted to go for the big one, the mistime it completely. The ball was up in the air and the fielder in the mid-off region made no mistake in grabbing that opportunity. 8 for 1 and Vinod Wilson providing the much needed breakthrough for the team. Mclaren Sports Club. What a way to bowl. A success very early on for Mclaren Sports Club. Wonderful catch from Shivam. Made no mistake in grabbing that opportunity. What a breakthrough in a very dangerous batsman just departed early on. But a lot of depth in the batting of ARYAN Panthers. 77 still to come. Samarth Gowns, that is a superman. And now Vishwajit Fattegaonkar, who will have the task to stay as long as possible. And he is capable of staying for all 20 overs. As going aerial is not his cup of tea. And a very warm welcome to all the spectators joining us live from Goa Livecast to watch these wonderful matches. T20 that is organized by Veling Cricketers, the Royal T20 Championship 2022. And this is the 7th day and the first match between ARYAN Panthers 77 and Mclaren Sports Club. Vinod Wilson to Visu. Watchfully played with the full face of the bat. And what is good about Vinod Wilson is the mixture, the mixing up of the delivery. Sometimes the pace, sometimes the ball coming slow one. Every ball is different and such a good control that he has on the ball and the grip that he holds the ball and a perfect line length. One among the best bowlers in Goa. It doesn't matter which format of the game that he's playing. Vinod Wilson has been having a massive experience. A drive gentle to get at the mark for Vishwajit Fattegaonkar. And once again, as you can see, he's just adjusting the field as per his requirement. It is not left hand, right hand combination,
But in spite of the fact that both the batters are right-handed, but still he wants to have the fielding as per his requirements. Oh, straight back. Oh, slight fumble there. What's happening there? The ball was unable to stop that from Shivam. But in the meantime, 2 runs for Rajan Damshekar. It wasn't a clean pickup. Pritesh Naik, as you can hear his voice, has a huge responsibility, because it's a very early success for Mclaren Sports Club. And another all-rounder performer, Pritesh Naik. Oh, very quick fire. That was pitch delivery, and a wonderful over which comes to an end from Vinod Wilson. One success as well. Completion of 2 overs, 11 runs for the loss of 1 wicket. ARYAN Panthers 77, batting first. To begin the third over, it's Rajat Singh, the captain, once again on the bowling proceedings. As a lot of strong wind is blowing and making slight a bit of a disturbance. It has happened twice. The belts are falling apart because of the wind. And yesterday it rained quite heavily in part of Karnataka. Hubli, Dharwad, it was like a quite strong wind. Fuller on, a good drive straight back to the bowler. Good fielding on his own bowling. Rajat Seth trying to just bowl right in the block hole and wants to get a wicket for himself, it looks like. Wonderful talent that is Rajat Seth. Very strong when it comes to batting. Well bowled right onto the stumps. The inside edge of the bat, and that's the dismissal of Vishwajit Fattegaonkar, and he has a success now, the captain. The wickets are falling very quickly for ARYAN Panthers 77. The score is just 11 and 2 fall of the wickets. 1 success for Vinod Wilson in the second over of Avinash Gowns, and now in the third over, the success for the captain. And such a wonderful batsman is out. So definitely a lot of pressure there on the batters. There has to be a good partnership. One partnership will be very handy here for team ARYAN Panthers 77. Both these batters need to just stay there on the crease. Rajan Damshekar has the reputation as he's going after the bowler. But can he settle himself down and play like a ship anchor's role as Samad Gowns just joins in? The Superman, well, he has to show his super qualities. One good partnership. ARYAN Panthers is going to recover, reconstruct and rebuild the damage done early on. What a wonderful line and length from Rajat Seth. Good length deliveries right onto the stumps. He's not giving anything away. And Vishwajit Fattegaonkar played a bit early as the ball, he could not just read the ball. That's the reason why he's paid price for that. Nicely done, and Samad Gowns gets off the mark with a single. That forward short leg direction that he's played with a bit of wristy work. The ball slightly drifting down to the leg side.
on this delivery from Rajat Seth. Once again, a very good morning to all the listeners on the YouTube. A warm welcome. Yokar Istiqbal. Suswagatam. Third over which is in progress and one success for Rajat Seth is over of Vishwajit Fattegaonkar. Such a quality batsman who was capable of staying for a long time and getting runs in the form of singles and twos is out. Fuller on this time. A little bit of a warm up there from Samarth. Lofted shot, the ball is right out from the middle of the bat and gone the distance from Rajan Damshekar. Boom, she goes. It doesn't matter how many wickets are falling, but he will like to play his natural anything short of length. He will definitely swing his bat. And what a timing that is. Absolutely wonderful timing from Rajan Damshekar. He doesn't like to stay for a long time being tied up or being just playing for singles and twos. He's got there those instinctives to go after the ball. Right from ball one. Well bowled. Good line, good length. A dot delivery to bring up the third over to an end. After the completion of 3 overs, it's 18 runs on the board for the loss of 2 wickets. So run a ball is what the batters are going now for the moment. After the completion of 3 overs, that is 18 deliveries gone by. It's 18 runs on the board for 2 wickets down. First to dismiss was Avinash Gowans for Vinod Wilson. And the second wicket of Vishwajit Fattegaonkar was been taken by the captain in his second over and the third over of the team. Once again, Yarnakulam Express, Vinod Wilson from the far end into the bowling proceedings to begin the fourth over. Facing him would be another Goa Police player, Samarth Gowans. A lot of Goa Police players are playing in this tournament. Vinod Wilson, Samarth Gowans, Avinash Gowans, Baba Malik, Thango Naik, Sanjay Naik. Yesterday was the maximum sixes award. He won. Sanju Samson, as we call him. Saravanna Sapka Anna is also playing for Goa Police as a regular player. So all this play comes together and form a team of Goa Police who have been regarded and been called as the undisputed champions when it comes to the T20 format of the game in all Goa T20 tournaments and not municipality and panchayat matches. Nicely done, lovely. Straight to the fielder there in the covers in the square leg. Slightly late on that occasion. But a very quick run, no hesitation and smooth sailing between these two players. And once again trying to just recover from the damage and form a partnership which will be very handy for ARYAN Panthers at this juncture of time, at this situation. They have to come up good. At the same time, make the good use of the power plays, which will be done by Rajan Damshekar. Lovely shot that will go a distance. Look at the towering sixer from him. Always gone right on the compound wall there. He's gone for the big one. He will not see who's the bowler. He will not see what pace the bowler generates. He will not see what a reputation the bowler has. Rajan Damshekar will just swing and swing big. He will take his chances and make his chances fancy in this 6 overs of the power play. In spite of the fact that the bowlers got 2 success in the early on. But Rajan Damshekar's good hitting will definitely give a good start here once again for ARYAN Panthers 77. One has to be sensible. That is Samarth Gowans. Another one is going after the bowler is Rajan Damshekar.
Oh, slow one, look at that. Once again, beautiful change of pace. Change of pace in English, in Hindi, Gati Parivartan. In Marathi, Gati Badal. In Malayalam, Vedamatam. In Urdu, is Raftar ki tabdili. Gatiman Fairfar in Gujarati. TK, the ball will once again race away. Well done, but not good enough to stop the ball. The ball has gone past the field. A little bit of hand to the ball. Very quick one. Rajan Damshekar is definitely going hammer and tongue at the moment, but you never know. Vinod Wilson's got some surprise package for him. As the mind is working so smart, so sharp of Vinod Wilson, how to bowl, how to control this batter who's just getting unstoppable. Look at it, once again change the fielding. The square leg has been sent in the deep square leg region. And the mid-off has been shaken to short mid-wicket. The entire structure, Sanket Moraska is brought to mid-off region. There is a mid-on. Lovely shot once again on the back foot this time. Much better line and much better distance. That's gone right into the compound wall there. Two big, huge, mighty sixes from Rajan Damshekar. He's going boom, boom after Vinod Wilson. And what a way to bring an end to the fourth over in the power play overs. Completion of 4 overs. 36 runs for the loss of 2 wickets. ARYAN Panthers batting first. As you can see on your screen, the team owner, Mithun Vaidya of ARYAN Panthers 77, with a cowboy hat, looking quite handsome on him. Very stylish, Mithun Vaidya. And he's also organizing a lot of tournaments, especially in tennis at Kundem, Ravalnath, Shri Ravalnath Sports Club. That is his club. Very jolly, very helpful, and a true lover for the game of cricket is Mithun Vaidya from Kundem, a businessman, and a lot of support for any tournament that comes under his scanner. He's definitely going to help and support those tournaments, especially the tournaments coming at Kundem. However, to begin the 4th over, it's once again the captain from the pavilion end will be beginning the 5th over. Score is 36 for the loss of 2 wickets after the completion of 4 overs. These two are looking good at the moment, the batters. Swing and a miss, this time the very first delivery once again. Look at the beautiful lining has been maintained by Rajat Seth. He's just not giving anything away. Just outside the off stump, and good variation on the length. Not trying anything extra like Vinod Wilson. Just keeping it simple and straight. Nicely done, a little bit of just chipped in by Samarth Gawans for a single gently in the covers. As once again you can see the line of fielders there in the covers. There is a short third man, there is a gully, there is a point, there is extra cover. Sanket Moraska, there is a deep sweep cover as well, and mid off. So many fielders in the covers for both the right-handers. And talking about the onside, there is a
Long on is Vinod Wilson for Rajan Damshekar. Now he gains the striking position. We'll expect some boom from him in this over. On the back foot this time, but straight right onto the stumps. Second wicket for the captain. Rajat Seth takes another wicket, and this time he bowled right onto the stumps and missed it completely. And look at the wickets being shattered and the bells flew apart. Beautiful delivery to dismiss the third wicket of ARYAN Panthers 77. Twelve balls and 25 runs contribution from a quick fire Rajan Damshekar. The third wicket down of ARYAN Panthers. The first to dismiss was Avinash Gaon, second Vishwajit Fattegaonkar, and now Rajan Damshekar in 12 balls, 25 runs contribution. Sagar Vantamuri, young talent. It all depends on Sagar how long he's going to just take the partnership alongside Samarth Gawans, and Samarth is there at one side of the crease. Someone is required to give him the kind of support which is needed to once again form a partnership and go a long way. This is just the fifth over which is in progress. Still after this over, more 15 overs to come. Two wickets for the captain, as he is definitely bubbling with confidence. The captain setting good example how to bowl, which areas to maintain. Watchfully played with the full face of the bat. His basics so right of Sagar Vantamuri, and a very young talent. He's definitely making a mark in this particular tournament, the Royal T20 Championship 2022. Once again, a wonderful over. This is turning out to be the fifth over. Of course, the fourth over was very expensive with two big ones coming from the bat of Rajan Damshekar or Vinod Wilson in the deep mid-wicket region, and the ball was been sent at quite a distance. One goes 85 meters, another one goes 90 meters straight away. Appeal for a leg before, but denied. The ball from the pad will be signalled, or from the bat is involved, and that's the reason why the appeal was denied for LBW. A single to bring up the over number 5 to an end. "37 runs, as just one run has been given by Rajat Seth, and what a wonderful over, and picked up a wicket of dangerous Rajan Damshekar. And of 5 overs, 37 for 3. ARYAN Panthers 77 batting first. Change in the bowling from the far ends, Prathamesh into the bowling proceedings.
Oh, he's having some difficulty there. Prathamesh with the left foot. He's been helped by his fellow fielder, Sanket Muraskar. And Sanket Muraskar has a lot of experience doing physiotherapy. He's always comes the first one to help any team members, and not only team members, even if the batters want some help, and Sanket Muraskar is always there to help and extend his support. Definitely is in agonizing pain there, Prathamesh. Not good for the bowler. That will definitely play in his mind, because it is his first over of Prathamesh and he has to be good. And Mclaren Sports Club is also organizing every year good tournaments. Of course, I've never been a part of that particular tournament, Mclaren Sports Club, but looking forward to giving the quality and organizing a fantastic tournament, Mclaren Sports Club. Muli Chasak, as they say, for Mclaren Sports Club. However, Prathamesh is looking good to begin the sixth over. Score is 37. Oh, big wide, that should be, and yes, it is. Sagar Vantamuri on strike and Samarth on the non-strike center. One good partnership with these two will definitely recover. Oh, shot of length, the ball is up in the air and there is no fielder there. It will go, run down to the fence, one bounce to the fence, beautifully worked and played on that rising delivery. Sagar Vantamuri. As I told you all that the pain must be definitely playing the mind of Prathamesh. It's what a good quality over has been bowled by the captain Rajat Seth and then Vinod Wilson. Both the bowlers picking up 1 wicket. I beg your pardon, Vinod Wilson is picking up 1 wicket and the captain picking up 2 wickets. And the runs are in control and a lot of wickets been fallen very quickly. That is 3 down, ARYAN Panthers. But now, what a good hit for the rising delivery by Sagar Vantamuri. Nicely done. There is a fielder. The ball has just gone past the fielder. It will race away to the fence. Very quick outfield there. Backward of the square leg. Beautifully worked and played, and back-to-back boundaries coming from Sagar Vantamuri. That only reminds us that the power play overs are still on, and this is the last over of the power play overs. Getting very expensive, Prathamesh. And maybe the captain Rajat Seth is just realizing, was it a good choice to bring Prathamesh? Or maybe he will bring him afterwards, bringing a change from that end in the next hours to come. We'll have to see and watch. However, lovely shot, a hat-trick of, oh no, 2 boundaries and a sixer coming this time. Pull and 50 runs for ARYAN Panthers 77 with the help of this huge sixer coming from the bat of Sagar Vantamuri. Pulled and beautiful timing. Pull successful, wonderful, beautiful. Gone the distance. And definitely Prathamesh is getting very expensive.
Well bowled, much better line. This time the inside edge of the bat takes the ball straight to the gully region for another single, adding up to the total to take the score to 53 runs. A lot of runs in this over, back-to-back boundary and then a 6. And now a single after that wide delivery. So altogether 16 runs already in this over. Look at it once again, the wall of fielders there, gully, point, cover, extra cover and mid-off, and there's no deep fielder though. There is a fielder, will cut it off, he does well. Once again nicely played this time from Samarth Gamas, but finds the fielder in the deep square leg region. That single sums up the over, end of 6 overs of the power play. It's 54 for the loss of 3. So 17 runs coming from the last over. One to go. One ball remaining. First wide. One ball remaining. Wide 4, 4, 6, 1, 1. So one ball is remaining. There was not wide. First. Okay. All right. It was a height. Okay. So end of an over. So it will be 53 in place of 54. Slightly outside and wide this time. Thick outside edge and straight to the field in the gully. Though they intended to go for that single, but they just stopped themselves and not to go because the ball was right in the hands of the fielder. Taking no chances that they've already lost 3 wickets. And one good partnership is forming now, definitely between these two highly qualified and very talented batters. Lovely shot, beautifully put in a deep square leg region. That will raise away to the boundary. The banner is down. Look at the power has been unleashed by the Superman. And yesterday, Fata poster Nikla Hero. As you can see, the banner was the ball right onto the banner. Once again, a much needed boundary here for ARYAN Panthers, 77 in the in the 8th over. The ball is up and once again the gap, the ball will race away to the fence. Back-to-back boundaries from Superman. And the score with the help of this boundary will move up to 62 runs. This is the 7th over which is in progress after that expensive over from Prathamesh, wherein 16 runs which came up in that particular over.
rising up to the occasion and playing a big innings. Samarth. It is a need of an hour, and Samarth Gans is making the most of it. Wonderful way to bat when the team lost 3 quick wickets, batting first. And what a partnership. Both are showing a lot of skills, responsibility, and playing with a lot of sense. Well bowled. Played straight back to the bowler. Inside edge of the bat, wrapped on the pad. A single will be very comfortable here. And with this single, the score has gone up to slowly 64 runs. Completion of 7 overs. It's 64 for the loss of 3. It's change in the commentary. Over to Chandan Singh. Singh is king. और इसी बीच पवेलियन एंड से गेंदबाजी की शुरुआत और धीरे से खेल दिया. हालांकि फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा. तो फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं. हिंदी कमेंटेटर चंदन सिंह. एक और यहां पे रन बढ़ता हुआ. इसी बीच और बढ़िया कवर के क्षेत्र में खेला. फील्डर मौजूद हैं, कोई रन नहीं. बहुत ही सुंदर यहां पे मौसम और इसी मौसम के बीच सुंदर मुकाबला चलता हुआ. हालांकि जगह बना के खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले का कोई कांटेक्ट नहीं. बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया. तो 3 झटके यहां पे लग चुके हैं आर्यन पैंथर्स को. 77. इसी बीच बॉलर चले और गेंद को उठा के मारा है. गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रनों के लिए जैसे ही बल्लेबाज को मौका मिला और गेंद को खड़का दिया. गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, बल्कि स्टेडियम के बाहर. 6 रनों के लिए तो बहुत ही ताकत के साथ खेला गया ये स्ट्रोक. जादुई बल्लेबाजी और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए बहुत ही सुंदर स्ट्रोक. बल्लेबाज जिन्होंने अभी छक्का लगाया, समर्थ.
तो काफी लंबा यहां पे छक्का लगाया था, गेंद बिल्कुल स्टेडियम के बाहर चली गई थी। गेंद पावर के शॉट साथ खेला गया ए स्ट्रोक और 6 रनों के लिए गेंद निकल गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर। तो जब जब मौका मिलता है बल्लेबाजों को हाथ खोलने का तो बिल्कुल अपना हुनर दिखाते हैं। मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच रखा होगा तेरे बारे में। तो बल्लेबाजी यहाँ पे आला किस्म की और सोच समझ के साथ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर रही है आर्यन पैंथर्स 77 और देखना है कितना बड़ा विशाल स्कोर देगी मैकलरेन स्पोर्ट्स क्लब को। तो समझ बूझ के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करने की ज़रूरत। 3 झटके, शुरुआती झटके लग चुके हैं, तो पावर प्ले का उतना फ़ायदा तो नहीं, लेकिन फिलहाल बढ़िया समझ बूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए आर्यन पैंथर्स 77 के बल्लेबाज। और अब गेंदबाज तैयार, सामने बल्लेबाज भी तैयार। और फिर से जगह बनाया और खेल दिया, किसी को कोई मौका नहीं, फिर से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत ही लंबा छक्का यहां पे बल्लेबाज के द्वारा लगता हुआ, तुरुक तुरुक धिंकारा रहा गेंद आसमान के सीने को चीरती हुई फिर से निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो लगातार दूसरा छक्का, बैक टू बैक दूसरा छक्का लगता हुआ यहां पे बल्लेबाज समर्थ के द्वारा। और यहां पे जादुई बल्लेबाजी, बिल्कुल मोर्चा खोल दिया है गेंदबाजों के खिलाफ। और लंबा लंबा छक्का यहां पे देखने को मिलता हुआ, गेंद रॉक नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर जाके गिरती हुई। तो पावर हीटर हैं बल्लेबाज। इसी बीच गेंदबाज चले सामने, बल्लेबाज तैयार। और अब की बार बिल्कुल छोड़ दिया और शायद सोच रहे थे कि आप स्टंप के बाहर जाएगी, लेकिन अंडरलाइन। और ओवर समाप्त, 8 ओवर समाप्त और 71 3 विकेट के 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो एक बार फिर से पावेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज। आलेख सामने, बल्लेबाज तैयार। और बहुत ही हालांकि सुंदर तरीके से गेंद को ढकेला, गेंद गई कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद हैं। इसी बीच एक रन यहां पे लेने का मौका। तो समझबूझ के साथ अब बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि 3 शुरुआती झटके लग चुके हैं, राजन, अविनाश और विश्वजीत पावेलियन लौट चुके हैं। इसी बीच और टहला दिया, गेंद जा रही है, हालांकि फील्डर मौजूद हैं। इसी बीच एक और यहां पे रन मिलता हुआ। ताकत और नजाकत भरा स्ट्रोक। इसी बीच द दिलेश कुक तिलक
चक्ररत्न दिलशान की तरह खेला, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज ने दिलशान द दिलेश कुक, इस स्ट्रोक पर किसी भी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं होता और गेंद निकल जाती है दन दनादन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही गजब की बल्लेबाजी, ऐसा लग रहा है जैसे कभी एक समय था जब भारतीय टीम में बल्लेबाजी करते थे अजहरुद्दीन, कलाइयों के जादूगर, तो यहां भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता हुआ। अब की बार पॉइंट और कवर पॉइंट के बगल से खेला, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया जगह बनाया और फील्डर के सर के ऊपर से दे मारा, गेंद निकल गई जमीन को चूमती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बल्लेबाज अपने रंग में नजर आते हुए। इसी बीच और हाथ खोला, गेंद को खेला ऑन साइड में, फील्डर रन खाते में जुड़ता हुआ और बल्लेबाज के खाते में जुड़ता हुआ। बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया था। बहुत ही सुंदर फील्ड की जमावट, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, गली, और जो थर्ड मैन का खिलाड़ी था उसे 30 गज के सर्किल के अंदर बुला लिया है इसी बीच। और बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट बल्लेबाज के द्वारा और ओवर समाप्त। 9 ओवर समाप्त हो गया, स्कोर 88 रन 3 विकेट खोने के बाद आर्यन पैंथर्स 77। तो 3 ओवर यहां पे समाप्त हो चुके हैं और दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज, और गेंदबाज तैयार और सामने बल्लेबाज भी तैयार। रॉयल T20 चैंपियनशिप का 6ठा सीजन चलता हुआ और बल्लेबाज रिवर्स स्वीप घुमा के मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और दोनों बल्लेबाज अब आपस में विचार विमर्श करते हुए और एक बार फिर से अपने भर की अगली गेंद लेकर और फुल टॉस बना के खेला और फॉरवर्ड और एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद हैं। इसी बीच 2 रन यहां पे पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। रोहन चले और फिर से गली के क्षेत्र में खेला धीरे से। इसी बीच एक और यहां पे रन पूरा करते हुए समझबूझ के साथ बल्लेबाजी, और जैसे ही मौका मिलता है हाथ खोलने का तो दोनों बल्लेबाज बिल्कुल नहीं कतराते। गेंदबाज चले और सामने बल्लेबाज के लिए और बिल्कुल धीरे से खेला खुद गेंदबाज के क्षेत्र में और गेंदबाज ने गेंद को पकड़ा तो कोई रन नहीं। इसी बीच बल्लेबाज के लिए और अब की बार उठा के मारा, हालांकि फील्डर मौजूद है वहां पे और बहुत ही सुंदर कैच। तो आर्यन पैंथर्स को लगने वाला चौथा झटका।
तो नए बल्लेबाज प्रीतेश, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, 4 विकेट गिर चुके हैं। सामने गेंदबाज चले और गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर समाप्त, 10 ओवर समाप्त, 91 रन, 4 विकेट खोने के बाद आर्यन पैंथर्स। पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे आलेख और सामने बल्लेबाज हैं सागर। तो बहुत ही बड़ा झटका लगा था समर्थ के रूप में, जो कि बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, गगनचुंबी छक्के लगा रहे थे, बिल्कुल गेंद आसमान को चूमती हुई जमीन पे आती थी। इसी बीच अपने ओवर की शुरुआत करेंगे गेंदबाज। सामने बल्लेबाज तैयार और जगह बना के खेला है, गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत ही सुंदर छक्का, यहां पे पहले ही गेंद को उठा दिया, गेंद आसमान में कबूतर की तरह उड़ती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत, पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखा देती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखा देती है। तो यहां पे विकेट, हालांकि थोड़ा जल्दी जल्दी विकेट का पतन हुआ है, तो अब यहां पे समझबूझ के साथ, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है, तो समझदारी के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत। और इसी बीच हल्के हाथों से खेला, गेंद को ढकेला कवर पॉइंट के क्षेत्र में, हालांकि पॉइंट के फील्डर मौजूद हैं। और इसी बीच मौका बना छोर बदलने का और छोर बदल लिया। अब सामने है बल्लेबाज प्रीतेश। यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को समझबूझ के अपने बल्लेबाजी के हुनर को दिखाना होगा, क्योंकि 4 झटके लग चुके हैं, शुरुआती झटके लग चुके हैं। अब प्रीतेश तैयार, गेंदबाज चले और बहुत ही बढ़िया, और बॉलर के बिल्कुल दाहिनी तरफ से खेला धीरे से। और इसी बीच 1 रन यहां पे और लिया, प्रीतेश ने अपना खाता खोला। और अब सामने बल्लेबाज, जो कि क्रीच में पैर जमा के बल्लेबाजी करते हुए, और फिर से धीरे से खेला, पुश किया और गेंद गई खुद गेंदबाज के पास, और गेंदबाज ने किसी भी रन लेने की संभावना को समाप्त किया। बहुत ही आज का पहला मुकाबला। इसी बीच बल्लेबाज को, और बल्लेबाज ने बढ़िया शॉट खेला, कवर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, और 1 रन यहां पे मिल जाएगा। और इसी 1 रन के साथ 100 रन पूरे, आर्यन पैंथर्स 77 के 100 रन पूरे। संकेत मोरे के द्वारा बहुत ही सुंदर फील्डिंग। इसी बीच, और वाह, बिल्कुल गेंद को दिशा दे दिया था, हालांकि फील्डर खड़े हैं, और पहला और यहां पे दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। तो बहुत ही चतुराई के साथ खेला था वहां पर प्रीतेश नाइक ने। और ओवर समाप्त, 11 ओवर समाप्त,
102 रन 4 विकेट के नुकसान पर आर्यन पैंथर्स। तो दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे रोहन और सामने बल्लेबाज हैं सागर। सागर जिनकी गहराइयों का अंदाजा लगा पाना मुश्किल। इसी बीच और अपने ओवर की अगली गेंद धीरे से खेला, हालांकि रन लेना चाहते थे, प्रीतेश नाइक ने मना किया और आखिरी समय में बल्लेबाज ने भी अपने इरादे को बदला और दोनों ही बैट्समैन अपनी अपनी क्रीज में सुरक्षित। बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसी बीच और जगह बना के उठा के मारा, गेंद हवा में है और जा रही है ऑफ साइड में, वहां पे डीप फील्डर मौजूद हैं। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। हालांकि इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर जगह बनाया और धीरे से खेला, हालांकि गेंद वहीं पे लुढ़क गई। काफी तेज चुस्त दुरुस्त विकेट कीपर ने किसी भी संभावना को समाप्त किया और अब दोनों बल्लेबाज आपस में विचार विमर्श करते हुए और बिल्कुल सही होता है कि आप दोनों आपस में तालमेल बना के खेलें। इसी बीच फिर से अब हल्के हाथों से खेला और बाउंड्री लाइन से फील्डर दौड़ रहे हैं और यहां पे देखना है दूसरा रन ले पाते हैं या नहीं, और एक ही रन मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। पहला रन बहुत तेजी से भागा था और सामने है प्रीतेश। रोहन चले प्रीतेश के लिए और वाह, बिल्कुल बल्ले के मुंह को खोला और गेंद को खेल दिया। गेंद गई दूसरी स्लिप, एक और रन यहां पे मिलता हुआ। तो जहां ताकत काम ना आए वहां पे दिमाग का उपयोग, और ये जो बीच के ओवर होते हैं इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत। रोहन स्पिन गेंदबाजी और फिर से बिल्कुल उसी शॉट की पुनरावृत्ति और फिर से दे के जाएगी एक और यहां पे रन और ओवर समाप्त। 12 ओवर समाप्त, 107 रन 4 विकेट के नुकसान पर आर्यन पैंथर्स 77। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। और अब पावेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे संकेत, और बल्लेबाज सागर के लिए कहना चाहूंगा कि जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले। तो आला किस्म के बल्लेबाज हैं, जब भी मौका मिलता है अच्छे अच्छे स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। और राहुल द्रविड़ की तरह, हालांकि 4-3 झटके लग चुके थे, तो बल्लेबाजी के लिए आए और अपने इस पारी को बहुत ही सही तरीके से संभालते और सजाते हुए, और
संकेत किए गेंद पॉइंट के क्षेत्र में खेला, वहां पे फील्डर मौजूद और युवराज सिंह की तरह फील्डिंग देखने को मिलता हुआ, बिल्कुल चुस्त और चौकन्ने पॉइंट के फील्डर। इसी बीच और फिर से बढ़िया शॉट और उतना ही बढ़िया सुंदर प्रयास, हालांकि एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, तो बढ़िया फील्डिंग का नजारा। अगर उन्हें गेंद बीट करती तो निश्चित रूप से निकल जाती 4 रनों के लिए, तो सुंदर फील्डिंग के बदौलत यहां पे निश्चित रूप से 3 महत्वपूर्ण रन बचाते हुए पॉइंट पे खड़े फील्डर। और अब सामने हैं बल्लेबाज प्रीतेश, जिनके बाजुओं में इतनी ताकत कि लंबे लंबे स्ट्रोक लगाने में सक्षम। इसी बीच संकेत किए गेंद और गेंद वहीं पे, कोई रन नहीं। संकेत चले प्रीतेश के लिए और धीरे से गेंद को टहला दिया और एक और यहां पे रन। तो बहुत ही बढ़िया कलाइयों का उपयोग करते हैं प्रीतेश नाइक, और जब मौका मिलता है हाथ खोलने का तो सुंदर सुंदर छक्के चौके लगाते हैं और गेंदबाजी गजब की कमाल की करते हैं। तो ऑलराउंडर, जितना तारीफ करें इनके लिए उतना कम। और इसी बीच जगह बना के खेल दिया, गेंद हवा में है, हालांकि फील्डर बिल्कुल बाउंड्री से सटे हुए और एक झटका लगता हुआ। तो आर्यन पैंथर्स को लगने वाला 5वां झटका, सागर कैच आउट होकर रनों की रफ्तार को बढ़ाने के चक्कर में रन आउट होकर कैच आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे सागर, और आखिरकार आउट होकर, कैच आउट होकर, हालांकि रनों की रफ्तार को बढ़ाना चाहते थे और ताकत वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्लाती किस काम की जवानी। थोड़ी सी वहां पे जोश की कमी और बिल्कुल बाउंड्री लाइन से सटे हुए फील्डर ने धीरज धारण किया और आखिरी समय तक गेंद पे निगाहें जमा के रखी और अंततः कैच पकड़ा और आउट होकर पवेलियन लौटे बल्लेबाज। उनका स्थान लेने के लिए आए हैं दत्तात्रेय, और यहां से दत्तात्रेय को प्रीतेश के साथ एक लंबी साझेदारी की जरूरत। तो आधी टीम पवेलियन में जाके लौट चुकी है और बहुत ही सुंदर मौसम और यहां पे सुंदर क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। फील्ड में हरी हरी सुंदर मन को मोहने वाली घास और बहुत ही तेज आउटफील्ड। इसी बीच गेंदबाज संकेत चले, सामने बल्लेबाज भी तैयार और लेग स्टंप के बाहर देखना है और यहां पे वाइट का इशारा। तो वाइट अतिरिक्त का इशारा और एक रन में और इजाफा होता हुआ। तो यहां पे दोनों को समझ बूझकर पारी को और क्लीन बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया गेंदबाज ने बल्लेबाज को। छठा झटका लगता हुआ
आर्यन पैंथर्स 77 को। तो 13 ओवर समाप्त और 110 पे 6। आर्यन पैंथर्स 77 और दूसरी छोर से गेंदबाजी करेंगे रोहन। बिल्कुल एक छोर यहां पे पकड़ के रखा है और हालांकि यहां पे विकेट का पतन, तू चल मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, तो 6 विकेट गिर चुके हैं और अब यहां से प्रीतेश नाइक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। स्पिन आक्रमण और धीरे से खेला, हालांकि ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, गेंद गई ऑन साइड में, पहली लेग स्लिप कह सकते हैं वहां पे, और एक रन पूरा करते हुए, हालांकि एक छोर पर बिरला वाइट सीमेंट की तरह खड़े हैं प्रीतेश नाइक और विकेट गिरते हुए अपनी आंखों से देखते हुए, और अब साथी खिलाड़ी को समझाते हुए कि आराम से खेलने की जरूरत। और फिर से धीरे से खेला और बहुत ही तेज रन यहां पे पूरा करते हुए, जैसे ही बल्लेबाज ने गेंद को प्लेस किया था और कॉल कर दिए थे प्रीतेश नाइक, और सुरक्षित उस कॉल को पूरा करते हुए, रन को पूरा करते हुए अब स्ट्राइक पे हैं और जगह बना के खेल दिया और बहुत ही बेहतरीन ताकत और नजाकत के साथ गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत ही दंदनाता शॉट और 6 रन। तो काफी देर से बल्लेबाजों को बांध के रखा था यहां पे गेंदबाज ने, मौका मिला प्रीतेश नाइक को, और प्रीतेश नाइक वो बल्लेबाज हैं जब मौका मिलता है तो उस मौके को नहीं छोड़ते। मौके पे चौका नहीं बल्कि छक्का लगाने की काबिलियत रखते हैं बल्लेबाज प्रीतेश नाइक, और इसी तरह के स्ट्रोक की जरूरत, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी कि समझबूझ के साथ और आखिरी तक यहां पे खेलना होगा प्रीतेश नाइक को। रोहन बल्लेबाज के लिए फिर से जगह बना के खड़का दिया और किसी को कोई मौका नहीं, गेंद निकल गई मिड विकेट के बगल से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। तो विकेट तो जरूर गिर रहा था दंदनादन, लेकिन मोर्चा संभाल लिया है बल्लेबाज ने, और अब बिल्कुल जम के खबर लेते हुए गेंदबाज
गेंदबाजों का बल्लेबाज प्रीतेश और तैयार। रोहन चले और बढ़िया गेंद को वहीं पे रोका, कोई रन नहीं तो समझ और बूझ के साथ बल्लेबाजी। हालांकि बैक फुट पे चली गई थी आर्यन पैंथर्स, लेकिन अब बल्लेबाज के इरादे बैक फुट में नहीं बल्कि सन फुट पे धीरे से खेला और शॉट के साथ ही रन को पूरा कर लिया। इसी एक रन के साथ ओवर भी समाप्त हुआ। 14 ओवर का खेल खत्म। 123 रन 6 विकेट के नुकसान पर आर्यन पैंथर्स 77। पावेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे संकेत और सामने है बल्लेबाज प्रीतेश। प्रीतेश के लिए कहना चाहूंगा कि इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह का यहां पे हुनर देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज के द्वारा। जैसे ही मौका मिला, हालांकि थोड़ी सी दबाव में जरूर थी टीम, लेकिन उस दबाव को दरकिनार करते हुए बल्लेबाज प्रीतेश और बहुत ही बढ़िया फुल टॉस बना के खेला, गेंद को धीरे से मोड़ा। हालांकि फील्डर मौजूद हैं। एक रन यहां पे और मिलता हुआ। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला था। इसी बीच ऑफ साइड में खेला, हालांकि फील्डर मौजूद। संकेत और हालांकि गेंद हवा में है, गेंद जा रही है, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन से के पास खड़े हैं। एक और यहां पे रन। संकेत की अगर हम बात करें, ये ऐसे कैच पकड़ते हो जैसे हाथ में फेविक्विक लगा के रखा हो, इनके पास से गेंद छिटक ही नहीं सकती। इसी बीच और वाह, जगह बनाया, गेंद को खेला। हालांकि फील्डर वहां पे मौजूद थे, खतरा हो सकता था, लेकिन यहां पे कैच छूटा और एक जीवनदान प्रीतेश को। प्रीतेश जो कि रनों की रफ्तार को बढ़ाना चाहते थे, गेंद गई सीधे बिल्कुल फील्डर के हाथों में जो कि बाउंड्री लाइन से सटे हुए थे। तो एक जीवनदान मिल चुका है प्रीतेश को और देखना इस जीवनदान का कितना फायदा उठा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल संकेत चले सामने अगले बल्लेबाज के लिए और गेंद जा रही है लेग साइड में। फील्डर दौड़ रहे हैं और इसी बीच 2 रन लिया बल्लेबाजों ने, हाँ, लेग बाई के रूप में। तो रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करते हुए बल्लेबाज प्रीतेश और अब सामने बल्लेबाज नागराज, राजाओं के राज नागराज तैयार और धीरे से गेंद को पुश किया, कोई रन नहीं और ओवर समाप्त। 15 ओवर समाप्त, स्कोर 128 रन 6 विकेट खोने के बाद आर्यन पैंथर्स 77। चौदह ओवर समाप्त। यहां अब इसके बाद 6 मतलब 36 गेंदें
आनी शेष और देखना है 15 ओवर समाप्त, तो 5 ओवर आने शेष। देखना है इन 5 ओवर में कितने रन अर्जित और जोड़ पाते हैं दोनों बल्लेबाज। बल्लेबाज तैयार हैं, सामने प्रीतेश नाइक और बॉलर चले। धीरे से खेला, हल्के हाथों से गेंद को वहीं पे दबा दिया और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। गेंदबाजी का छोर विनोद के ऊपर। अब सामने बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं नागराज। तो बाकी की गेंदों में देखना है कितना रन जोड़ पाते हैं और गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद शरीर पे लगी, वहीं पे रुकी और बहुत ही बढ़िया कॉल वहां पे प्रीतेश के द्वारा और 1 रन पूरा होता हुआ। तो लगभग में 175 70 या 75 के बीच में अगर स्कोर रहता है या 80 हो जाए तो निश्चित रूप से कुछ सेफ माना जाएगा। इसी बीच गेंदबाज बल्लेबाज प्रीतेश के लिए और बैक फुट पे गए, गेंद को खेला ऑन साइड में और एक और यहां पे रन। फाइन लेग के क्षेत्र में खेला था, तो यहां पे थोड़ी गियर बदलने की जरूरत और फिर से धीरे से खेला और स्ट्रोक खेलते ही रन के लिए दौड़ गए और रन पूरा होता हुआ। तो स्ट्रोक के साथ ही बल्लेबाज रन के लिए निकल जाते हैं और रन पूरा भी करते हुए सुरक्षित। अब सामने हैं प्रीतेश जो कि लंबे लंबे शॉट लगा सकते हैं और जादुई बल्लेबाजी हैं करते हैं। इसी बीच चले और हालांकि एक ही रन मिलेगा। मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर दौड़ रहे हैं और गेंद को उठाए, एक ही रन। गेंदबाज चले, सामने बल्लेबाज के लिए और बहुत ही खूबसूरत शॉट। गेंद हवा में है, खेलना कहीं और चाहते थे और यहां पे कैच ड्रॉप होता हुआ, तो दोनों ही बल्लेबाज जीवन दान लेके बल्लेबाजी करते हुए 1 रन इसी के साथ मौका मिला 1 रन लेने का और 16 ओवर समाप्त, स्कोर 134 रन। स्कोर 134 रन, 6 विकेट खोने के बाद मैकलरन आर्यन पैंथर्स 77 और आगे का आंखों देखा हाल आपको हमारे सहयोगी कमेंटेटर जो कि अंग्रेजी में नदीम अहमद जी सुनाएंगे। The ball drifting down to the leg side. Completion of 16 overs, 135 now with the help of this extra.
Oh, once again the ball is up in the air and there is a fielder getting underneath it, but will not get to the ball. Just taking their chances, both these batters, and one live for Pritesh Naik, who played just a casual lofted shot and just got lucky for Sanket Moraskar. He's bowling such good line and length and is trying to come up with opportunities of catches, but the catches are not being taken. Well, the ball is up and this time Sanket Moraskar takes the matters in his own hands. And that's the end of Pritesh Naik. The life is just once and not twice. And Sanket Moraskar shows a good example how to take the catches. And he's excited and delighted how dangerous Pritesh Naik would have been as the team Mclaren Sports Club just realizes. And that's the reason why they're celebrating it. Definitely big wicket, and Pritesh Naik is out this time. Once again with the mistiming, the ball up in the air and caught and bowled by Sanket Moraskar on his own bowling in the 17th over. So 22 runs contribution from Pritesh Naik was just a handful of runs. But he should have been stayed in the last slot overs. That would have been more entertaining for the crowd. As he's such a good timer of the ball. He was just getting in the groove of batting. But with twice the mistiming, the batsman at this standard won't survive. Pranal Sawant walks in after the dismissal of Pritesh Naik for 22 runs. His contribution towards the team, ARYAN Panthers 77. Lot of adjustment there from Sanket Moraskar. As you can see for the left-hander, the shot third man, gully point, deep extra cover and long off. Oh yes, is the call and the finger is going up. The batsman is asking the question that the ball would have missed the leg stump. Pranal Sawant is out without scoring. Got LBW. Amir Kadikar Bala walks in, he's taking his guard, marking his line, ready to face the first delivery from Sanket Moraskar. He's picking up wickets. He's on hat-trick. Watchfully played with the single. He gets off the mark very quickly, looking for two, and they're going for it. It could be a close touch and go. The ball slightly uppish on the bells, above the bells, and the ball has gone past the ball. But in the meantime, got off the mark with the two quick runs. Bala.
What a fight for runs here as Sanket Moreskar is bowling his best. All his 4 overs of his bowling quota. He's been deployed beautifully by the captain Rajat Seth on time as Sanket Moreskar is a wonderful bowler who knows exactly how to maintain the good areas of bowling, how to get those dot balls and get wicket and put some pressure on the batters. Wonderful line and length. Good drive, gentle drive for a single. .139 with the help of this single. The score has gone up to after the falling of 8 wickets. 139, and this is the 17th over which is in progress. 8 wicket down, score is 139. Gentle drive, take the score to 140. Panthers, after winning the toss by Mclaren Sports Club and opted to bowl first. So now 3 overs remaining, 18, 19 and 20th over, and how many runs? Considering at least 20 runs in 18 balls will be, the score will be around 160 to 165. That should be a good score. But since Bala is there and Amir Kadekar is a good striker of the ball, the score might just go up by maybe to 170. As is the projected score. So from the far end, it's once again Ernakulam Express, Vinod Wilson. Nagraj on strike. Just a gentle drive, just tilting his bat for a single in the point region. So Nagraj is doing the right thing. He's giving a maximum of strike to Bala. A lot depends on now Bala how to just take the team to the good total, a good target. At least 170 they'll be looking for. Will be a good fighting score for sure. In now remaining 17 deliveries, and the score is 141. A slight change in the fielding been made by the bowler Vinod Wilson. The short fine leg has been taken in the short third man position, and the deep third man has been slightly shaken away. The deep, has been, there is a gully now. There is a gully point, deep sweeper cover, extra cover and long off. Deep third man is Shivam. Quick delivery, well bowled, better on the pace. And he's got those variations so good, Vinod Wilson. Every ball is a different ball, and every ball he makes it think for the batter how to play. He brings in a lot of variations. But Rajan Damshekar really picked him up quite nicely. In the initial overs, nicely done, just angle it, slight fumble there. Bala won't hesitate to go for 2 very quickly. He's a very good runner. Works an employee of police department of Goa, Amir Kadekar, a very good cricketer. Score is 142 with the help of this angle from Bala. Look at, once again he's not satisfied. He's just trying to alert the fielders. Be on your positions. Oh, look at the mixture, so good. That was a shot of length delivery and completely mesmerizing delivery that was for Nagraj. Nagraj is unable to read that ball. What kind of a delivery is that? There's a lot of variation in the pace of the delivery, apart from being the variation in the length after pitching the ball, just turning away. Right onto the money, but beautifully driven, handsomely driven for 2 runs, straight down the ground to deep extra cover position. Picked up 2 to take the score to 144. I have an opportunity to welcome our official scorer is Saish
In the left hand is having a flag. In the right hand he's having a pen. And right in front of him is a scorebook. Well bowled once again, beaten on the length. And that's the end of 18 overs. It's 144 for 8. Once again, it's Sanket Moraskar on the bowling proceedings to begin the 19th overs. 144 for the loss of 8 wickets. ARYAN Panthers 77, batting first. Once again, you can see the arrangement in the field positions by Sanket Moraskar. His younger brother Sahil Moraskar is a very good mimicry artist. He makes mimicry of all the commentators of Goa and Maharashtra. A shot of length this time, wanted to play a big shot but missed it completely, Bala. And especially he makes the good mimicry of Ashok Jinaik. These. Oh, bowled him. How many wickets? He says 5 wickets for Sanket Moraskar. Sanket, your message has been read by all the audience. You said 5. Wonderful bowling. 5 wickets for Sanket Moraskar. In the meantime, a single from the new batsman, Sarvesh. And that's the last wicket of ARYAN Panthers 77. And the score with the help of this single has gone up to 145. Nagraj, now the responsibility is huge on his shoulders. Played with the gentle hands, another single. So they should look for every ball. A single will be a good batting at this point of time for ARYAN Panthers. But Sanket Moraskar, with the confidence of picking up 5 wickets, he has literally bowled the best in the hot contender for being the man of the match. If Mclaren Sports Club is winning the match, he will definitely be a man of the match, undoubtedly. He's on the front runner.
He's good with the bat as well. He's a specialized batsman, Sanket Moraskar. Nicely done by Nagaraj. Beautifully done. Could be a couple of runs here. No, just one run. So 19 has gone by. It's 148 for 8 for 9. $148 after 19, and the last wicket, last over, is the captain himself, Rajat Seth, from the far end. The ball is up and will be a boundary for sure, and yes, it is. Gone with the pace of the delivery. The ball, a slight square that was directed from the batsman Nagaraj, and the ball has gone. 150 up for ARYAN Panthers 77. In fact, 152 with the help of this boundary. $152. Oh, the ball is up and will go straight to the field. 153 is the target to achieve for Mclaren Sports Club in 120 deliveries. We'll have to wait and watch. Can Mclaren Sports Club get to the target of 153, which is not at all a huge target? Or can ARYAN Panthers defend the target of 153 with a good bowling attack, good fielding? As umpire says, it's time and over.
Gets off the mark, the captain Rajat Seth. Suraj Tari getting the striking position. Amir Kadekar on the bowling mark. Bala. That's a no ball and it could be a free hit, and yes it is. Here it will come the signal. Beautiful shot from Suraj Tari. Made the most out of that no ball and a free hit. Such a good talented cricketer from Shiroda, Suraj Tari. Nicely worked and played, but straight to the field in the gully. There is a protection, no chance of a run. So good start, a slow but steady start here from Mclaren Sports Club batters. The captain Rajat Seth and Suraj Tari as opening partnership to chase the target of 153 to win in allotted 20 overs, that is 120 deliveries. Wonderfully played on the covers and picks up a single. So everything is going good here. It's a good bowling proceedings from Bala, as well as some good looking shot from Suraj Tari to the fence in the covers. 53 is not a huge target considered in 120 delivery, that is in the T20 format of the game. What is good is 170, 180. Anything beyond 180 is definitely a massive total. Lovely line, perfect line to bowl to the left hander, but nicely played, chipped in, and calm, composed, sensible inning. Completion of 1 over, 8 runs without a loss. The ball is up in the air. Two runs easy picking up in the
Good pull. This time in the gap, the ball might just race away to the fence or will be pulled back on time. Well done. To take the score tally to 12 runs. Every ball now, a couple of runs coming from the bat of the captain of Mclaren Sports Club. Rajat Seth, such a wonderful run getter that he is to watch. Beautifully works in the covers and good pulls as well. Lovely piece of timing. The ball is gone a distance. Whoa, that's gone all the way for the 6 runs. And that is a quality shot from Rajat Seth. Right coming right out from the middle of the bat and going the distance. Wonderful puller of the ball. Such a wonderful pull. Beautiful look. The ball is up in the air. No fielder there and making his chances fancy in the 6 over of the power play, which is definitely an advantage for the batters to make the chances fancy. No matter where the ball deploys the fielder, but Rajat Seth is going to find a way to send the ball to the fence. Wonderful striking. The ball is once again come down without any wind, and it's not been balanced. The wickets are not holding the bell in the gap. Pritesh Naik takes a note of that. He's the man behind this tournament since last 6 years. He's been doing a wonderful tournament of Royal T20 Championship. He's just improvising every year. The tournament is just getting better, bigger and more prestigious. No, it won't fall. Avinash counts from the far end. Oh, very quick delivery. The ball is in the gap once again. Oh, slight fumble there. That should have been stopped. Very disappointing. Absolutely very disappointing for Avinash Gowns. One, the catch was up in the air and just falling away from Rajan Damshekar. And now the ball was able to be stopped, but just the ball going sneaking through. This run should be saved. ARYAN Panthers don't have a huge total of 180 or 190 to defend. What they're defending is 153. If these runs are not to be stopped, then it will be an easy cakewalk for Mclaren Sports Club to get to the target of 153 and win hands down. Nicely done, beautifully played on the back foot. He's such a cool customer, Rajat Seth. As he's the captain, the responsibility, the sensibility and the ability to stay there for a long time and play in a long inning, which is his natural ability. Such a wonderful batsman that he is, and the captain as well. Completion of 2 overs, 23 without a loss. A gentle drive straight to the covers, straight to the fielder.
Bala into the bowling proceedings. Third over in progress. Well, the ball is up and will go past the fine leg fielder, backward of the wicket keeper. The ball has gone for a fence. This kind of flashy shot will also definitely help the batsman get some runs on the board initially. And that's the reason why the 6 overs of the power play is so important for the batters. It was not a good shot selection. Neither he timed the ball well, Suraj Tari, but still the ball had enough pace on it to travel backward of the wicket keeper to fence. And the score has gone with the help of this boundary to 28 runs. Oh, nicely done. This is timing. Absolutely beautiful timing this time from Suraj Tari. This is called the quality. What a good opening pay this is for Mclaren Sports Club. And both the batters are contributing with the runs. And a lot of boundaries to see back to back. With the help of this boundary, now the score has gone up very quickly to 32 runs. Amir Kadekar has to be more effective, has to work on his line, his length. He's got that pace, and slightly the ball drifting down will definitely allow the batters to pull, and both the batters are a quality batsmen of Mclaren, specialized batsmen and our openers. They're always good with the opening pair. Rajat Seth always is good, and Suraj Tari is showing his quality as well. Oh, catching opportunity there. TK, that should have been taken by Vishwajit Vattegaonkar, and the ball has gone once again to the fence. That would have been taken. Good dive, but not good enough. Vishwajit Vattegaonkar could have taken this catch, as he has taken this kind of catches in the previous matches. He's disappointed, and so is Bala. That was definitely so close to picking up an early wicket here for ARYAN Panthers. As I remember the good saying of the boxer Muhammad Ali, nicely done. Once again there is a field in the deep square leg region. He will cut it off, and that will be just one, not more than that. As the late boxer Muhammad Ali once said, fly like a butterfly, sting like a bee. End of 3 overs. 37 runs without a loss. Good drive in the covers. Yes, is a call, a very quick call. That is.
On the back foot, once again played with the waiting. Is very quick call from Suraj Tari, not taking any chances, and good call, very early call, allowing Rajat Seth to recover and quickly get back to the crease. And the calling is very important. The ball is up and will go travel. Couple of bounces to the fence. Beautifully timed shot from Rajat Seth. Is such a good timer. Every time he goes out to bat, he contributes with the runs, and he's a specialized batsman who gives a very good start to any team that he plays for. And now, since he's the captain, the responsibility is more, and the good quality what he's displaying. Because being a captain is a job of responsibility. He is answerable to the management of Mclaren Sports Club. That's why he was trying to just give his best of the performance what he can. Such a wonderful batsman that he is, a good, humble, polite, very talented Rajat Seth. Always good to look him playing and batting. I definitely enjoy his batting as well. So are the spectators. And now, after the completion of 4 overs, 43, almost going at the rate of 11 runs. What a wonderful start in these power play overs. So far, no luck, no wicket for ARYAN Panthers 77. The ball has gone past, and once again the ball will find the fence. The very first delivery. Dismiss the captain. Rajat Seth still cannot believe that he is out, and he has to walk back to the pavilion. Much needed wicket here for ARYAN Panthers 77. He's definitely very disappointed. It was such a good going from the batters. Every over the fence, and then the second delivery was written in the destination that the curtains down for Rajat Seth, the captain of Mclaren Sports Club, is out. Sarvesh picked up a good wicket, a prize wicket.
Good looking, driving the covers straight to the fielder. So now, as you can see, the body language has changed with the fall of the very first wicket. They know that how dangerous Rajat Seth was. If he had to survive for a long time, he would have single-handedly taken the team's total to 153 for sure. Is that capable? Good looking, driving the gap. The ball might just race away or will be fielded. Good footwork. Sometimes playing football will help definitely in the game of cricket. This is good footing from the fielder. Well done, says Pritesh Naik. I will also start playing football, he says. Wonderful work of the footings and stop. The ball could have just raced over to the fence. It was nicely driven on the rise. The ball is up and will travel one bounce to fence. Beautifully picked up from Suraj Tari, as he is now taken the responsibility after the fall of the wicket of Rajat Seth. It's 50 up for Mclaren Sports Club with the help of this boundary. For the loss of one wicket after the completion of 5 overs. 52 for 1. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। Pritesh Naik from the far end to begin the last over of the power play. Shot of length played once again in the covers, and once again, as you can see, the wall of field has been deployed in the covers for the right-hander Suraj Tari, as well as the new batsman Rohan Bugati. A drive straight to mid-off. Yes, I will just like to, there is a first slip. Rajan Tamshekar is standing as if he has nailed his footings with the hammer. Just not moving. A slight movement. A lovely pull shot, but there is a fielder. Pritesh Naik knows exactly where to deploy the field. And look at that, the pull shot straight to the fielder for 1. Rajan Tamshekar once again with a hammer and nails. Wonderful starter. A quick fire. There is a fielder in the gully, point cover, short extra cover, and mid off. The ball is up and will travel this time. The upish. Oh, maybe just one shot of the boundary, and the ball has gone straight over the rope. So that is one advantage. The 6 overs of the power play. A little bit of elevation. The ball goes past the fielder, will race away to the fence, except those 2 deep points where now the fielding is being deployed in the deep long on and deep mid wicket. The mid wicket is coming in, but the deep mid off is going the deep long off, and that is the changes what Pritesh Naik has made in the field before he could deliver the next delivery. Nicely done, but straight to the fielder. Perfect fielding there. No fumbling. No, the ball is going past. He's just trying to minimize the chances for the batsmen not to score, but the batsmen are skillful and they are on the back foot or on the front, working their ways.
Nicely bowled. No much room, and the ball was slightly had an extra bit of a rise as well. End of 6 over the power play. 57 for 1. Lovely shot, but there's a fielder. Will he cut it off? He will. Just 1 run with that outstanding shot. Through the covers, and the ball is racing away. But once again, straight to the field and been deployed in the deep sweeper cover to stop those deliveries played in the covers. It's Rohan Bogati in the 7th over once again. His bowling is best, what he can. Slightly the ball headed straight to the gully field. A slight bit of a fumble, but he's in control of the ball. No chance for Suraj Tari to go for that single. Alongside Rohan Bogati once again trying to form a partnership. And Sarvesh Gowde on the bowling proceedings in this 10th over. Thick edge, the ball is running down deep third main region, finds the fielder. Could be another single here for Suraj Tari. Once again rebuilding, reconstructing, recovering from the damage of that wicket of Rajat Seth. Every point, every time a partnership will definitely help the batters get some runs in the form of singles, twos. Coming down the track inside edge of the bat, the ball travels in the deep mid-wicket region. There is a fielder, Veling cut it off, it as well. Once again restricted the batters to just one, in spite of the fact the ball is going almost to the edge of the boundary. End of 7 overs with the help of this single. 62 for 1.
on the back foot, and Pritish Naik once again on the bowling mark, has begun the 8th over, and with the help of this single is 63. Mclaren such a good side, depth in the batting. Lofted shot, the ball is up in the air, and enough for bat on that, and yes it is. That's gone a huge mighty sixer. A lofted shot once again. What a good hitting this is. This time it's a boundary. Suraj Tari at his best. What a display of his batting. Wonderful timing. The full face of the bat, and he's going aerial. He's going after Pritesh Naik. It is very challenging now for Pritesh Naik to how to stop Suraj Tari's great batting inning. Oh, this time the ball is up and will just gone past the fielder. Good footwork from Bala. Very expensive over. He's been annoyed by this. Pritesh Naik has never been so expensive before. But Suraj Tari is going after him. Much better line, very quick one this time. Well bowled by Pritesh. But a little bit of bat on that. What a tug of war this is between Pritesh Naik and Suraj Tari. More to come. More to come in this manner. It will be very interesting to see the battle between Suraj Tari versus Pritesh Naik. As definitely for now, it's Suraj Tari who's dominating, who's having an edge over Pritesh Naik. But can Pritesh Naik make a comeback with his brilliancy, with his skills in bowling? "76 runs with those a couple of runs in the 8th over. Well bowled, a dot ball to sum up the over number 8. 76 for 1. आठ ओवर की समाप्ति। सभी दर्शकों को नदीम अहमद की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। छिहत्तर रन बने हैं 8 ओवर के समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान पर। मगर जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल एक शानदार शुरुआत देने में सक्षम रहे, कामयाब रहे कप्तान और सूरज तारी। हालांकि जब 4 ओवर की समाप्ति हुई थी तो स्कोर हुआ था लगभग
43 यानी कि 11 रन प्रति ओवर बना रही थी टीम मैक्लेरन स्पोर्ट्स क्लब और उनका लक्ष्य 153 रन। मगर रजत सेठ के आउट होने के बाद फिर से एक बार साझेदारी जो कि सुंदर दिखाई देते हुए रोहन और सूरज तारी के बीच। हालांकि 8 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिम्मेदारी बिल्कुल संभाल ली है सूरज तारी और गेंदबाज सागर वंटामुरे। गेंदबाजी क्रम में पवेलियन एन की ओर से 9वें ओवर की शुरुआत। हाफ वाली पर फिर से एक बार उछाल दिया है हवा में और इस बार हल्की सी फंबल और सुंदर फील्डिंग है। बिल्कुल मौका नहीं दिया कि 2 रन का बल्लेबाजों को इस प्रकार से सुंदर फील्डिंग होती हुई अब यंगस्टर्स द्वारा अविनाश गांव, समत गांव जैसे दिग्गज खिलाड़ी आर्यन पैंथर्स में शामिल। फुल टस पर बिल्कुल गेंद को खेला है जहां पर बैकअप करते हुए सुपरमैन के नाम से जाने जाते हैं पूरे गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका में। एक बड़ा खिलाड़ी समर्थ गांव, अविनाश गांव, जिन्हें नाम ही दिया गया है डब्ल्यू यानी कि वॉरियर्स, एक योद्धा। गेंद हवा में बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की ओर आती हुई सुन सकते हैं आवाज, बिल्कुल धमाका सुनाई देता हुआ कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल ऊपर। और हमारे निखिल यूट्यूबर घबरा गए हैं। तो बिल्कुल बल्लेबाजी का आगाज करते हुए सूरज तारी, धमाकेदार बल्लेबाजी। और हमारे को कमेंटेटर जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए हैं, बड़ी बड़ी आंखें कर सूरज तारी की ओर देखते हुए कि क्या जबरदस्त बल्लेबाज है। बैकफुट पर खेल दिया इस बार, गेंद हवा में मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात। ओ गेंद को फील्ड करना था, बिल्कुल एक गलत सोच। कैच के लिए शायद आए हैं, न कैच मिली न गेंद गई 4 रनों के लिए। अगर इस प्रकार से होलसेल में रन मिलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जीत आसान होगी मैक्लेरन स्पोर्ट्स क्लब के लिए। और बिल्कुल जिस प्रकार से परसों के दिन 182 रन बनाकर भी टीम नहीं जीत पाई थी, मगर आज निश्चित तौर पर पूरे चांसेस हैं मैक्लेरन स्पोर्ट्स क्लब को इस मैच को जीतने के। हल्की सी दिशाहीन गेंद खेलने की कोशिश निश्चित तौर पर मिस कर जाती, कोई अपील नहीं। सुंदर शॉट्स के साथ बिल्कुल एक बेहतरीन स्थिति पर लाते हुए टीम मैक्लेरन स्पोर्ट्स क्लब को सूरज तारी अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर जब टिक जाए तो लंबी पारी खेलने में सक्षम ये बल्लेबाज सूरज तारी। फिर से एक बार बड़ा शॉट मगर गेंद मिड विकेट की दिशा में, जहां पर न सिर्फ डीप मिड विकेट को रखा गया है बल्कि काउस कॉर्नर खिलाड़ी को भी रखा गया है। और रनों का दायित्व निश्चित तौर पर इन दोनों ही बल्लेबाजों पर रहेगा कि किस प्रकार से रनों को बनाकर और अच्छे साझेदारी के साथ रन बनते हैं। तो फिलहाल 9 ओवरों की समाप्ति, 89 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख सकते हैं आसमान पर बिल्कुल कोई बादल छितराए हुए नजर नहीं आ रहे, यानी कि यह बिल्कुल सूर्य भी काफ़ी खुश होकर इस मैच को देखता हुआ, जो कि सुंदरता से इस टूर्नामेंट का आगाज़। फिर से एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा प्रीतेश नाइक को कि 5वीं दफ़ा मुझ पर भरोसा जताते हुए इस टूर्नामेंट को फिर से एक बार मुझे मौका देते हुए कमेंट्री का। और दर्शकों से गुजारिश है कि आप के अच्छे कमेंट्स होने चाहिए सीखने के लिए, तो आपके अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार। अगर क्रिटिक्स कमेंट हैं तो भी चलेगा, क्योंकि इम्प्रूव करने के लिए अच्छा रहेगा। तो वह कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से आए चंदन सिंह, जिन्हें मैं अक्सर कहता हूँ सिंह इज किंग।
फील्डिंग की जमावट आप देख सकते हैं। 10वीं ओवर की शुरुआत लेकर गेंदबाजी के क्रम में लाए गए हैं दूर वाली छोर से। प्रणाल सावंत 21 नंबर की जर्सी पहने हैं। पटकी हुई गेंद इस बार काफी उछाल। तो 50 रन पूरे होते हुए सूरज तारी के बिल्कुल अपना अर्धशतक पूरा करते हुए सूरज तारी ने अपना बल्ला लहराया। शानदार फॉर्म में सूरज तारी। अभी भी लंबी पारी खेलने की कगार पर सूरज तारी है। ऐसे लग रहा है कि अभी अभी उतरे हैं मैदान पर। पूरे जोश और उल्लास में नजर आते हुए सूरज तारी। बेहतरीन बल्लेबाजी उनकी ओर से। पटकी हुई गेंद इस बार स्क्वायर कट गिर दिया है, वहां पर खिलाड़ी तैनात। गेंद तेज रफ्तार से निकल गई है 4 रनों के लिए। सुंदर टाइमिंग से भरपूर शॉट रोहन के बल्ले से निकलता हुआ, बिल्कुल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में क्रैकिंग ब्यूटी। और इस चौके के साथ स्कोर तेजी से पहुंचता हुआ 94 रनों पर। पूरे तरीके से सक्षम है टीम लक्ष्य तक पहुंचने में। जिस प्रकार से शुरुआत दी है कप्तान ने सूरज तारी ने, अब रोहन बुगाती भी आकर बिल्कुल बुगाती बाइक की रफ्तार से गेंद को भेजते हुए सीमा रेखा पार। नाम है रोहन, सरनेम है बुगाती। फिर से एक बार दिशा उसी और वहां पर अविनाश गावंस जो कि तैनात। कोई रन का मौका नहीं। अगर विश्व में सबसे तेज बाइक की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बुगाती बाइक सबसे तेज। और उसी नाम के साथ उतरे हैं रोहन। और सूरज सोच रहे हैं कि मैं कावासाकी नाम से उतरूंगा अगली बार। फिर एक बार सुंदर ड्राइव मगर सीधे खिलाड़ी को पाया शॉर्ट कवर्स की दिशा में। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद होगा बदलाव। कमेंट्री में फिर से एक बार सुनिए आप दनदनाती करारी आवाज हमारे चंदन सिंह के। प्रणाल सावंत इस बार सुंदर लाइन, इस बार कलाइन के बदलत खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी बल्लेबाजों को। और इस 1 रन के साथ 10 ओवरों की समाप्ति। 95 रन 95, 1 विकेट के नुकसान में। चेंज इन दी कमेंट्री।
तो एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सहयोगी अंग्रेजी कमेंटेटर नदीम अहमद जी का। और इसी बीच पवेलियन एंड से गेंदबाजी, और पहली ही गेंद, हालांकि बल्लेबाज तेजी के साथ स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद पैरों में लगी और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने, मौका मिला था छोर बदलने का तो छोर बदल लिया। 1 रन और यहां पे खाते में जुड़ता हुआ, टीम के खाते में जुड़ता हुआ। तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला। अब मुकाबला ऐसे समय में आ चुका है कि यहां पे समझबूझ के साथ गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने की जरूरत। मंजिल नजदीक नजर आती है। इसी बीच बल्लेबाज ने गेंद को खेला, गेंद हवा में है, हालांकि फील्डर वहां पे खड़े थे, उनके हाथों से लग कर गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो लॉन्ग, ये ऑफ साइड में खेला गया स्ट्रोक बिल्कुल, हालांकि फील्डर मौजूद थे, एक मौका बन सकता था, लेकिन गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ यहां पे 100 रन पूरा होता हुआ, मैक्लरेन स्पोर्ट्स क्लब का 100 रन पूरा होता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। तो बल्लेबाज को जैसे ही मौका मिला, बल्लेबाज रोहन को, और रोहन ने सूरज ने बिल्कुल थोड़ा सा भी समय को नहीं गंवाया और गेंद को खेल दिया, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई थी इसी बीच, और बहुत ही बढ़िया सीधे बल्ले से खेला, पुश किया, और फील्डर मौजूद प्रीतेश, कोई रन नहीं। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और अब सामने तैयार, और उठा के मारा, गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद गई गैप में और दे के गई महज ये 4 उपयोगी रन। तो बल्लेबाज, दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए और धीरे धीरे जीत की तरफ अग्रसर होते हुए सूरज, जो कि अर्धशतक यहां पे लगा चुके हैं और नाबाद बल्लेबाजी करते हुए, इसी बीच पवेलियन ने से और उठा के मारा, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स हमारे सर के ऊपर से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जियो दंदनादन बल्लेबाज ने बहुत ही लंबा छक्का लगाया, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इश्क और इलेक्शन में जो वादे होते हैं उसे ही हवाई फायरिंग कहते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी हवाई फायरिंग कि गेंद निकल गई स्टेडियम के बाहर 6 रनों के लिए। इसी बीच एक बार फिर से, और अब की बार ऑफ स्टंप के बाहर 1 और रन, 1 और यहां पे रन मिलता हुआ। और बहुत ही बढ़िया धीरे से गेंद को टहला दिया, हालांकि गेंदबाज ने खुद गेंद को रोका और ओवर समाप्त, 11 ओवर समाप्त, और 111 1 विकेट के नुकसान पर आर्यन पैंथर्स मैक्लरेन स्पोर्ट्स क्लब।
34 गेंदों पर 69 रनों की ताबड़तोड़ पारी यहां पे खेला है बल्लेबाज सूरज ने, और अभी क्रीज पे बिल्कुल मौजूद हैं और दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज सागर। देखना है सागर क्या गागर में सागर भर सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बड़ी विकेट की यहां पे तलाश, और आहा बहुत ही गेंद कुछ क्षण के लिए हवा में थी और उतना ही बढ़िया प्रयास विकेट कीपर के द्वारा। बिल्कुल कुछ समय तक हवा में खुद थे विकेट कीपर, गेंद भी हवा में, लेकिन गेंद उनसे पहले जमीन को चूम गई इसी बीच। और बढ़िया शॉट खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लॉन्ग ऑन, बिल्कुल जो बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर हैं उनके पास मौका बना एक और रन लेने का। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो, ये मत सोचो कि हार होगी, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। तो यहां पे कुछ नया करने की जरूरत गेंदबाज को, और इस जोड़ी को तोड़ना होगा। और इसी बीच बहुत ही बढ़िया शॉट, हालांकि खेला कवर पॉइंट के क्षेत्र में और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो एक और यहां पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद फील्डर पॉइंट ही समझ लीजिए, फील्डर के बगल से उन्हें चकमा देकर निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी बीच और फिर से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फील्डर मौजूद हैं लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। बाउंड्री लाइन की तरफ से फील्डर दौड़ रहे हैं, कवर के क्षेत्र में खेला था। इसी बीच मौका बना और उस मौके का फायदा उठाते हुए 2 रन तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, जितना हम सोच नहीं सकते उससे भी कहीं बढ़िया बल्लेबाजी, और फुल टॉस बना के खड़का दिया, मेंटोस फील्डर के हाथ में, और बहुत एक और झटका लगता हुआ। तो बहुत देर के बाद जिस विकेट की तलाश थी वहां पे ये विकेट दिलाते हुए आर्यन पैंथर्स के गेंदबाज, और दूसरा झटका लगता हुआ मैकलैरेन स्पोर्ट्स क्लब को। आउट होने वाले बल्लेबाज सूरज, जो कि आउट होकर पवेलियन लौटते हुए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी किया है यहां पे सूरज ने। शायद 70 या 72 रन बना के पवेलियन आ रहे हैं, हमारे स्कोरर हमको बताएंगे। बहुत सुंदर बल्लेबाजी सूरज के द्वारा। अब सूरज, जो कि बहुत ही बढ़िया पारी खेल के पवेलियन लौटते हैं, तो दूसरा झटका लगा और उनका स्थान लेने के लिए गए हैं नए बल्लेबाज संकेत। गेंदबाज के लिए कहना चाहूंगा कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं, कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूं। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जिस विकेट की तलाश काफी देर से थी यहां पे आर्यन पैंथर्स 77 को, वो विकेट यहां पे निकाल के देते हुए गेंदबाज सागर। लो फुल टॉस और बल्लेबाज लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारना चाहते थे और बहुत ही सुंदर वहां पे कैच लिया था
खड़े फील्डर ने। इसी बीच सागर, गेंद पैरों पे थी और मोड़ दिया, गेंद जा रही है ऑन साइड में, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब और एक ही रन मिलेगा। तो इसी एक ओवर समाप्त, 12 ओवर समाप्त हुआ, स्कोर पहुंच गया 119 रन 2 विकेट खोने के बाद मैकलरेन स्पोर्ट्स क्लब। तो एक बार फिर से पवेलियन एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार और सामने बल्लेबाज भी तैयार। बल्लेबाज संकेत फील्ड का थोड़ा ध्यान रखते हुए, मुआयना करते हुए। इसी बीच और बहुत ही बढ़िया लेग और मिडिल स्टंप पे गेंद को मोड़ दिया, गेंद जा रही है ऑन साइड में, फील्डर मौजूद हैं। इसी बीच एक और रन जुड़ता हुआ। प्रणाल सावंत और सामने बल्लेबाज तैयार। बहुत ही बढ़िया और गेंद को घुमा दिया, फाइन लेग के क्षेत्र में कोई खिलाड़ी नहीं है और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत चौका और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर दनदनाती हुई 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल बल्लेबाज ने आगे जाके कलाइयों का उपयोग, भरपूर कलाइयों का उपयोग और बहुत ही बढ़िया जादूगिरी यहां पे बल्लेबाज के द्वारा। और इसी बीच और एक बार फिर से उठा के मारा है, हालांकि फील्डर मौजूद हैं और अब की बार बहुत ही सुंदर कैच। तो पवेलियन लौटना होगा बल्लेबाज को और तीसरा झटका लगता हुआ यहां पे आर्यन पैंथर्स 77 को 24 रनों के स्कोर पे तीसरा झटका लगता हुआ। तो अभी अभी तीसरा झटका लगा रोहन के रूप में और सूरज ने, जिन्होंने 37 गेंदों पर 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेला था वहां पे, और हालांकि आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जो बल्लेबाजी हो रही थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखा है। अब गेंदबाज आर्यन पैंथर्स 77 के और विकेट जल्दी जल्दी 2 और विकेट निकालते हुए तो मैच में पकड़ बनाते हुए
आर्यन पैंथर्स के गेंदबाज इसी बीच, और अब की बार अपील जरूर और देखना होगा, हालांकि उत्साह जरूर था। और इसी बीच एक रन यहां पे पूरा होता हुआ लेग बाई के रूप में बैट से, एक रन बैट से, इसी के बैट में हालांकि गेंद लगी थी, नहीं तो काफी करीबी मामला हो सकता था। और अब स्ट्राइक पे बल्लेबाज हैं संकेत, दाएं और बाएं हाथ के, अरे यार इसी बीच बॉलर चले संकेत के लिए, और बहुत ही बढ़िया गेंद देखा और सोचा समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। तो जीतने के लिए 153 रनों की जरूरत, और जीत की जो खुशबू होती है वो महकती हुई करीब पहुंचते हुए बल्लेबाज इसी बीच, और अब की बार लेग स्टंप के बाहर, तो एक और यहां पे रन मिलता हुआ, और लगभग में मंजिल से कुछ ही पग दूर है यहां पे मैकलैरन स्पोर्ट्स क्लब की टीम, उनके बल्लेबाज विजय की तरफ आगे बढ़ते हुए। इसी बीच अगली गेंद लेकर चले, और लेग स्टंप के पे थी, बल्लेबाज ने गेंद को मोड़ दिया, और एक और यहां पे रन मिलता हुआ, और इसी के साथ ओवर समाप्त। 13 ओवर समाप्त हुआ, स्कोर 127 रन, 3 विकेट खोने के बाद मैकलैरन स्पोर्ट्स क्लब। और आपको याद दिलाना चाहूंगा ये मुकाबला आर्यन पैंथर 77 वर्सेस मैकलैरन स्पोर्ट्स क्लब के बीच होता हुआ। आर्यन पैंथर 77 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में हालांकि ऑल आउट हो गए थे, 152 रन, और जीतने के लिए 153 रनों की जरूरत थी मैकलैरन स्पोर्ट्स क्लब को, उसके जवाब में बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए, और लगभग में पूरी तरीके से इस मुकाबले को अपनी तरफ कर लिए हैं। दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे, और बढ़िया बिल्कुल पैर पे गेंद थी और धीरे से टहला दिया, गेंद जा रही है, और फील्डर मौजूद हैं, लेकिन उतना ही बढ़िया तेज रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच, 2 रन यहां पे पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सागर जब जब विकेट की तलाश, उस विकेट को लाके दिए हैं अपनी टीम के लिए, और फिर से बहुत बढ़िया, और वहां पे फील्डर खड़े थे प्रीतेश, हालांकि गेंद को पकड़ नहीं पाए, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और दूसरा रन लेना चाहते थे, खतरा हो सकता था, लेकिन आखिरी समय में अपने इरादे को बदला और क्रीज में सुरक्षित तेजी के साथ खेला गया था स्ट्रोक, और एक ही रन मिलेगा। तो अब दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है, और देखना है कि कुछ चमत्कार कर पाते हैं गेंदबाज सागर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी तक बढ़िया गेंदबाजी, और
बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो जिसका कोई जवाब ही नहीं, तो लाजवाब बल्लेबाजी यहां पे मैकलरेन स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाजों द्वारा। सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा हो, ऐसा लग रहा है जैसे बबूल टूथपेस्ट करके आए हों। और ओहो, फुल टस बना के खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर नहीं पकड़ पाए और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो 4 रन यहां पे और मिलता हुआ इसी 4 रन के मदद से स्कोर जा पहुंचा 134 रन। और शायद थोड़ी सी दिक्कत मधुमक्खी फील्ड में, तो वहां पे बचने की जरूरत, क्योंकि ये जब वो देखने में छोटा लगे चोट करे गंभीर, छोटी छोटी मधुमक्खियां और फील्डर के सर के ऊपर से जाती हुई, और लगता है अंपायर के भी बगल से निकल रही थी, तो अंपायर भी अपने आपको बचाते हुए इसी बीच अब निकल गई हैं। रास्ता साफ। अरे हो, अभी हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और जब तक वो निकल ना जाए तब तक आप इंतजार करें। और अब निकल गई, अंपायर का इशारा आ चुका है। गेंदबाज तैयार, सामने बल्लेबाज। धीरे से खेला, कोई रन नहीं। बल्लेबाज तैयार और शनफुट पे गए, अगले पैर पे, और गेंद को धीरे से मोड़ा। 1 रन यहां पे आसानी से पूरा करते हुए बल्लेबाज। अब सामने है संकेत। मुकाबला तो बहुत ही दिलचस्प हो रहा था, लेकिन आर्यन पैंथर्स को जो शुरुआती झटके लगे, जिसके वजह से बहुत बड़ा टोटल नहीं दे पाए, और उसके जवाब में और एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक, हालांकि गेंद गई फील्डर प्रीतेश के हाथों में, गेंद को उनके हाथों से छिटकी। इसी बीच मौका बना एक और यहां पे रन पूरा करने का। 14 ओवर समाप्त हुआ, स्कोर 136 रन। 3 विकेट खोने के बाद मैकलरन स्पोर्ट्स क्लब। एक बार फिर से पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे प्रणाल सावंत, और सामने बल्लेबाज तैयार हैं संकेत। देखना है कि अभी कितने ओवर तक और खेल चलेगा। इसी बीच बढ़िया गेंद और उतना ही सुंदर स्ट्रोक, गेंद को खेला ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर के बगल से। हालांकि फील्डर पीछे मौजूद हैं, 1 ही रन मिलेगा। तो पूरी तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखा है इस मैच में मैकलरेन स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाजों ने, और कुछ ही फासला जीत का। इसी बीच गेंदबाज, और बहुत ही बढ़िया गेंद बल्ले से लगी, शरीर से लगी, वहीं पे लुढ़क गई। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो बढ़िया यहाँ पे मुकाबला, और थोड़ी हल्की धूप
और उतना ही सुंदर ठंडी ठंडी शीतल शीतल मन को मोहने वाली वाय यहाँ पे हवा चलती हुई, बहुत ही सुंदर फील्ड, बिल्कुल एडन गार्डन की तरह। इसी बीच और जगह बना के धीरे से खेला और एक रन और अब बल्लेबाजी बाज संकेत, और यहां पे एकाक लंबे हिट संकेत और जगह बनाया, हालांकि गेंद को खेला बहुत ही सुंदर तरीके से। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद हैं। इसी बीच बल्लेबाजों को मौका था 2 रन पूरा करने का और उस मौके को पूरा किया। 2 रन यहां पे पूरा होता हुआ तो लंबा टोटल नहीं दे पाए आर्यन पैंथर्स 77। और हालांकि थोड़ा सा दर्शकों का मनोरंजन जरूर किया था प्रीतेश नाइक ने अपने बल्लेबाजी से। और आज गेंदबाजी में हालांकि विकेट नहीं धीरे धीरे क्या जल्दी जल्दी जीत की तरफ अग्रसर होते हुए आर्यन मैकलरेन स्पोर्ट्स क्लब। और ओहो बढ़िया गेंद और जाने दिया विकेट की मैकलरेन स्पोर्ट्स क्लब। तो यहां पे 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी करेंगे प्रीतेश और सामने बल्लेबाज आलेख। इसी बीच बढ़िया गेंद और धीरे से खेला, एक ही रन। और विकेट कीपर ने बहुत ही बढ़िया गेंद को पकड़ा और थ्रो किया, तो 1 रन देखना है। हालांकि प्रीतेश अभी तक कोई विकेट नहीं निकाले हैं और जब गेंदबाजी के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से 3-4 विकेट का महत्वपूर्ण योगदान जरूर होता है। तो देखना है क्या एक आध विकेट निकाल के देंगे। सामने हैं संकेत, थोड़ी सी फील्ड में बदलाव करते हुए, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से और उठा के मारा है। बल्लेबाज ने अपने बाजुओं को खोला और गेंद को घुमा दिया, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 147 रन। तो एक और बाउंड्री की जरूरत, अगर छक्का लगा तो निश्चित रूप से महेंद्र सिंह धोनी वाला छक्का होगा जो कि 2011 वर्ल्ड कप में लगाया था। तो वैसे ही छक्का लगा और मैच जीत, और अब स्टंप के बाहर थी। हालांकि शॉट के लिए जगह बनाना चाहते थे, आखिरी समय में इरादे को बदला। तो देखना है छक्के या चौके ही लगा के जिताएंगे बल्लेबाज संकेत मोरे। और हालांकि बहुत ही तेजी के साथ खेला गया स्ट्रोक, फील्डर मौजूद हैं। इसी बीच 1 रन और यहां पे मिलता हुआ प्रयास जरूर। तो प्रीतेश हालांकि आज बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन विकेट उन्हें नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं कम टोटल की वजह से बल्लेबाजों को मौका मिला कि आराम से खेलें। और ओवर की अगली गेंद लेकर प्रीतेश, और बिल्कुल पैरों पे गेंद थी
और वहीं पे गेंद को धीरे से पुश किया, कोई रन नहीं। हालांकि बहुत ही मुरलीधरन की तरह इनकी गेंदें घूमती हैं, लेकिन आज कोई चमत्कार नहीं होने वाला लगता है ऐसा। और प्रीतेश चले सामने बल्लेबाज के लिए और देखना है फिर से बढ़िया गेंद। हालांकि अपील जरूर, लेकिन अंपायर ने उस अपील पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। और इसी के साथ ओवर समाप्त, 16 ओवर समाप्त हुआ। स्कोर 148 रन 3 विकेट खोने के बाद मैक्लैरेन स्पोर्ट्स क्लब। और एक बार फिर से गेंदबाजी में थोड़ी सी तब्दीली और पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे आमिर। सामने बल्लेबाज संकेत के लिए और पहली ही गेंद, हालांकि ठीक इसको स्ट्रोक खेला था और बहुत ही सुंदर फील्डिंग वहाँ पे प्रीतेश के द्वारा और डायरेक्ट थ्रो मारा था, बिल्कुल गेंद स्टंप में जाके लगी थी। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि बहुत बढ़िया आला दर्जा के फील्डर भी हैं। तो देखना है संकेत अब छक्का या चौका क्या लगा के जिताते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि 5 रनों की जरूरत, चौका लगाया तो स्कोर लेवल, छक्का लगाया तो जीत। इसी बीच और गेंद जाके उनके शरीर में, हालांकि फाइन लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लपेटना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके शरीर में टकराई और वहीं पे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा जरूर कि अगर स्कोर 175-80 का होता तो मुकाबला दिलचस्प और कांटे का होता। तो ये जो 20 रन कम हुए। इसी बीच और हालांकि शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद थी, रफ्तार को कम किया था, तो एक और यहाँ पे डॉट बॉल होती हुई और संकेत इंतजार में है उस गेंद की कि जो इनके रडार में आए और खेल दें, बिल्कुल दिनेश कार्तिक की तरह निर्दास ट्रॉफी की फाइनल जैसे उन्होंने छक्का लगाया था, तो छक्का ही लगा के जिताना चाहेंगे बल्लेबाज और इंतजार करते हुए कि वो घड़ी कब आएगी। और हालांकि गेंद एक और यहाँ पे पैर में जाके लगी थी, एक और रन यहाँ पे। तो अब मौका मिला है सामने बल्लेबाज आलेख को कि आलेख एक सुनहरे सुलेख में लिखें और चौका या छक्का लगाएं और जीत कराएं मैक्लैरेन स्पोर्ट्स क्लब को। काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं समर्थक और दर्शक कि कौन बल्लेबाज बाउंड्री लगाएगा जिस पे आईएसआई जीत वाला होलो मार्क होगा। और इसी बीच दोनों बल्लेबाज बाउंड्री लगाने के चक्कर में इंतजार करते हुए उस गेंद का, और अभी तक मौका नहीं दिया है गेंदबाज ने, हार नहीं माना है और वो कहते हैं ना शस्त्र को नहीं छोड़ा है। इसी बीच समाप्त हुआ, स्कोर 149 रन और 3 विकेट के नुकसान पर मैक्लैरेन स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ पे आमिर द्वारा सिर्फ 1 रन खर्च किया है और गेंदबाजी दूसरे छोर से करेंगे और बल्लेबाज सामने
संकेत। हालांकि मैच में सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है और गेंदबाजी करेंगे अविनाश। हालांकि एक लेग स्लिप है ऐसे कह सकते हैं आप। इसी बीच फास्ट गेंदबाजी और पहले ही गेंद को उठा दिया, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो मैक्लरेन स्पोर्ट्स क्लब ने इस मैच को जीत लिया है 7 विकेट से। आर्यन पैंथर्स 77 और मैक्लरेन स्पोर्ट्स क्लब के बीच मुकाबला चल रहा था। मैक्लरेन ने 7 विकेट से इस मैच को अपने नाम कर लिया है। Test. Big congratulations to team McLaren Sports Club. Test. Pritesh. Test. So welcome to the post-match presentation, and what a fantastic match won by McLaren. I would like to call upon the captain of ARYAN Panthers and also the captain of McLaren Sports Club for. All right, Rajat is here. Rajat. Rajat, congratulations to you. And 153 was not a big total, and what a chase! Good start. Everything went as you had planned, and it was in the end a win-win situation for McLaren Sports Club. Yeah, plan was simple. Just initially, anyone gets start, he should take the game. This was our plan. And over here, we have noticed that if you stay on the wicket, and in last 5 overs, you can take the match from any team. So after that lost 2-3 days back, a good recovery and
looking forward to many more wins in this tournament? Actually, we had given a great target that day, but we took it lightly. But this mistake should not be carried forward in the match. This was our plan. And today, all were positive and all were doing their great thing by Sanket. So, overall, it was a good game. As a captain of the team, Mclaren Sports Club, you think the unity is capable of making it to the top two in this tournament? Yeah, our plan is to make to the semi-finals, but every game is different, so plan will be also different. But yeah, we are positive. All the best for you, Rajat. Congratulations and stay back. I would like to call the captain of ARYAN Panthers 77. If you can find some time, Vishwajit Fattegaonkar is here. Visu, batting first, it wasn't a good total to keep in front of such a wonderful team like Mclaren Sports Club. At least 165, 170 would have been a good total. 15 to 20 runs short. After 11 overs, 128 for 4. I think we were 20 runs short. What do you think went wrong in the batting department that if 70? Yes, our batsmen went for hitting the runs instead of staying there. Yeah, that was a Few wickets just fell off, and even you wanted to stay there. As we have seen your batting. You're the batsman who can go out there and stay for a long time, picking up singles and twos. That also did not work in your favor today. Yes, today not going out of our plan. I was trying to stay, but inside edge and went on the wicket. So, yeah. Reassessing, rethinking, and coming back with a bang. Yeah, we will try to come back and come back hard. Let's see. Let's hope for the best. Tough luck, Visu, and all the best for the future matches. Thank you. Thanks a lot. Punya, please step on. Punya Palkar, please come down. Punya Palkar is here, who will be giving away the match. It is none other than Suraj Tari. Suraj, congratulations for being the dynamic player of the match with a wonderful performance and a great sense of batting. In the hands of official umpire Punya Palkar. Suraj Tari, please receive your dynamic player for this award. Suraj Tari, put your hands together. Suraj, don't go away. A maximum success for you. Sanket, congratulations. And the team, the unity is absolutely loaded with some good all-rounder performers. And when the best team, you have to perform the best. A lot of challenges, and what a comeback for Mclaren Sports Club. Yeah, a good comeback by the whole team, and this shows the character of the guys in the